Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is observation method. आज का हमारा मौजू है ऑब्जर्वेशन मेथड. डियर स्टूडेंट्स, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केस स्टडी मेथड, राइट. तो आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड पे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. सो द वर्ड ऑब्जर्वेशन has been derived from the Latin word observare, which means to keep open or to look outside. Thus, according to etymological meaning of observation, we simply keep our eyes open and see certain things outside. Observation seems to be easy and simple, but it is not as simple as it seems to be. Observation is much more than seeing something or looking outside. या मैं ऐसा कहूँगा, observation deals with the overt behavior of persons in appropriate situations. Observation may be defined as measurement without instruments. In educational psychology, observation is most commonly used of all measurement techniques. In the present as well as in the past, students have been labeled as good, fair, or poor in achievement and lazy or diligent in study, etc., on the basis of observation. Similarly, teachers listen to speeches and rank students 1, 2, 3, 4, and so on. So, dear students, the meaning of observation can be further illustrated by highlighting following features. Based on senses, direct technique, data collection technique, continuous use of experiences, behavior of human beings, micro study, formal and informal method, etc., right. So this is the meaning of observation. तो सिंपली ऑब्जर्वेशन का मतलब है यानी किसी चीज़ पे ख़ास नज़र रखना, राइट. चूँकि बात हो रही है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, चूँकि मैंने पहले ही कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट. तो यहाँ ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने बच्चों का बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स हमने बच्चों का जो बिहेवियर है हमने उसको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. तो हमने बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी है, हमने बच्चे को कीनली देखना है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या है, या मैं ऐसे कहूँगा उसकी जो अवोट बिहेवियर है या उसका जो कवोट बिहेवियर है उसको अच्छी तरह से मेजर करना, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना, यह हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन as a method of studying behavior consists perception of an individual's behavior under natural conditions by other individuals and the interpretation and analysis of this perceived behavior by them. It is thus essentially a way of perceiving the behavior as it is. Dear learners, by this method we can infer the mental process of others through observation of their external behavior. In fact,
Observation method is an indirect approach to the study of mental process. Dear students, observation method study the behavior of human beings as well as of animals, that is their bodily actions, bodily changes, gestures, facial expressions, sounds and movements. It is one of the oldest techniques that man has made use of. Even today, it is our most common experience to notice farmers feel the breeze, watch the sky, sun, moon, and stars, to all determine what the weather is likely to be and what season is approaching. The physician and psychologists depend heavily on what they observe of the patient's talk, gestures, and facial expressions. John Jacques Rousseau writes, watch nature long and observe your people carefully before you say a word to him. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों का बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा यानी ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एज वेल एज ऑफ एनिमल्स। यानी सिंपली अगर एक टीचर है तो वो बच्चों का जो बिहेवियर है वो इसको मतलब वो उनका जो बिहेवियर वो स्टडी कर सकता है विद हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी उनकी बॉडीली एक्शंस क्या है, बॉडीली चेंजेस, उनके जो गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, साउंड्स एंड मोमेंट्स। यानी बच्चे को हमने कीनली ऑब्जर्व करना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी है कि बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई मतलब इंडिविजुअल मेरा जो उसका जो बिहेवियर है ऑब्जर्व कर रहा है या स्टडी कर रहा है, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, मैंने अभी कहा इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, यानी बहुत पुरानी मेथड है जिससे हम किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी एनिमल का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो स्टेप से पहले हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की भी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हेल्प इन illustrating the meaning of observation. There are various types of observation method. For example, on the basis of form. On the basis of form, there are two types of observation: formal observation and informal observation. एक्चुअली बात हो रही है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मतलब टाइप्स ऑब्जर्वेशन की कितनी टाइप्स हैं जिससे हम किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। On the basis of control, there are two types of observation: uncontrolled observation and controlled observation. उसके बाद on the basis of planning, there are two types of observation: planned observation, unplanned observation. On the basis of interviewer, individual observation, group observation. On the basis of information, qualitative observation, quantitative observation. तो these are some types of observation. तो अब हम बात करेंगे what are the different types of observation. तो टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है ऑब्जर्वेशन की, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकम्स मोर और लेस
one of the groups which are under observation. The observer has a dual role to play. He or she may share the situation as a visiting stranger, an attentive listener, an eager learner, or as a full fledged participant observer. This kind of observation yields very flexible and more reliable results. It helps in disclosing minute, delicate, and hidden facts about economically, right? उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Dear students, so non-participant observation, the observer takes a position from where his presence is not disturbing the group. Non-participant observation helps in recording and studying the behavior of a particular person or group in detail in a given situation or some specific characteristics of the group under observation. This technique is most useful in case of infants, children or abnormal persons. जो नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन मेथड का दैट इज structured observations. These are much too formal and provide systematic data on predetermined criteria under controlled situations. Interaction analysis of classroom verbal behavior is an example of structured observation. जो next है that is unstructured observation. It is mainly associated with participant observation in which the observer considers aspects of behavior in terms of their context, situation of which they are a part, right? उसके बगैर भी बहुत सारे स्टेप्स है इसमें. फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, डिटेल्ड इंट्रैक्शन, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, interpretation, verification of results. So dear students, these are some steps involved in observation method. Thank you. Have a nice day.